Good morning, my dear student. Today we will read your class 12th history. We will continue your class 12th history. Chapter 11 Rebels and the Raj, the Revolt 1857 and its representation. My dear student, if you have remembered my previous class where I have discussed the various points on the basis of their points, we will try to read this chapter. We will try to understand the whole chapter. We will discuss about the causes of the revolt and their expansion and why revolt failed and what was the role of the local rulers in revolt, jamidars in revolts. What was the meaning of paintings that was made by the British painters? What they want to prove that this revolt. And if you have remembered my previous class where I have discussed that the feature of the revolt, and I give the various examples that the various people believed that revolt was what that was not only Sipahi mutiny. Someone claimed that was Sipahi mutiny. Someone claimed that was not Sipahi mutiny. Someone claimed that was national revolt. Someone claimed that was the conspiracy of Hindu and Muslims. Someone claimed that it was a proper planning by the extremists against the Christianity. And also someone say that कि ये जो रिवोल्ट था उसमें हिंदू और मुसलमान का दोनों का बराबर का अनुपात था, अपने जो उनकी असहमतियां थी उनके खिलाफ इन लोगों ने चलाया था. ये सारी चीजें हम लोगों ने फीचर्स ऑफ द रिवोल्ट में पढ़ा था. वी हैव डिस्कस दैट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ द रिवोल्ट. फीचर्स. टुडे we will discuss the next topic, the causes of revolt. Causes of this revolt. Causes of this revolt, it means in this topic we will try to discuss about that what was the causes behind the revolt. Only Sipahi unsatisfactions, that was only main reason for the revolt? Perhaps no. Why? Because when you will have completed this topic, then you can understand that only the Sipahi unsatisfaction was not only the reason of this revolt. Reason of this revolt was the various. First, in short, we will discuss only few topics. The first, the causes of revolt. First topic, political causes. Political causes. Second, political causes. Second, social causes. Social oblique religious causes. Third, economic causes. Economic causes. And fourth, that is the very important, that was sudden reaction. That was the four causes. On the basis of that, we will try to understand that why revolt happened.
इसके आधार पे हम ये देखेंगे कि रिवोल्ट में क्यों विद्रोह हुए. That causes revolt, the causes of the revolt, the political causes, 1, social or religious causes, 2, the economical causes, 3, and the sudden reactions, 4. On the basis of that, we will try to understand the revolt. So let's start the first causes, the political causes. प्लीज नोट इट, आप इनको नोट कर लीजिए. प्लीज नोट इट इन योर कॉपी. द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, द पॉलिटिकल कॉजेज. सेकेंड, सोशल कॉजेज और रिलीजियस कॉजेज. थर्ड, इकोनॉमिकल कॉजेज. एंड फोर्थ, सडन रिएक्शन. व्हाट वाज सडन रिएक्शन? क्या सडन रिएक्शन हुआ था? इन 4 पॉइंट्स के आधार पे हम रिवोल्ट के कॉजेज को समझेंगे. वी विल स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ 4 रीजन्स, एंड व्हेन we will completed the 4 causes, 4 regions, you can easily obtain that actual what happened during that time, why everyone unsatisfied with them, why the Major Harriet explained that this revolt was not only a Sipahi mutiny. Various peoples, non-Sipahi, also involved in this revolt. Why the others document also what कि वो चीख के चिल्ला कह रहे थे कि ये सिर्फ सिपाही रिवोल्ट नहीं था. हमने बात की थी कि इस रिवोल्ट को 3 लोगों ने, फर्स्ट मैंने कहा था बेंजामिन डिज़रायली, सेकेंड मैंने आपसे कहा था अशोक मेहता, थर्ड वीडी सावरकर, एंड फोर्थ शशि भूषण चौधरी. What they explained? They explained that this revolt was national revolt. ये चारों एक शब्द में कह रहे थे. बेंजामिन डिज़रायली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि ये रिवोल्ट 1857 का क्या था? एक राष्ट्रीय विद्रोह था. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू बेंजामिन डिज़रायली, who was the member of British Parliament, he announced in the British Parliament that revolt was the national revolt. Second, Ashok Mehta, he was the Indian historian. He wrote a book, The Great Rebellion. In this book, he tried to prove that on the basis of that causes, that revolt was the national revolt, not it was Sipahi mutiny, not it was the simple uprising. B.D. Savarkar, he also wrote a book, Indian War of Independence, 1857. In this book, he tried to prove that this was not the national revolt. According to him, that it was the planned freedom struggle. And Shashi Bhushan Chaudhary, The Great Rebellion 1857, he tried to prove that this revolt was national revolt. Why they are trying to prove कि ये नेशनल रिवोल्ट था? क्यों ये कह रहे थे? इसके पीछे यही काजेस थे, जिन काजेस को समराइज किया, जिन काजेस को एनालिसिस किया, और इसी एनालिसिस के आधार पर इन लोगों ने प्रूव करने का प्रयास किया कि एक नेशनल रिवोल्ट था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह था. हम वी विल रीड आल्सो, वी विल ट्राई टू प्रूव कि इसी के आधार पे, इन्हीं के जो एक्सप्लेनेशंस हैं, इन्हीं के जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस व्हिच वाज गिवन बाय दैट राइटर्स, which was given by the British officials, which was collected by the courts. On that, we will also try to prove that that was the national revolt. There were, in the higher class, you will discuss and debate that was it national revolt or mutiny or such type of other incidents.
Here it is not in your syllabus, it is out of your syllabus. We will discuss that. It was it revolt, was it mutiny, or was it the others, uprising? There were three words which were used by that revolt. What? The first word, as you know, that revolt. Second word, mutiny. And third word, uprising. These are the three words that was used by the contemporary historians. That it was revolt, was it mutiny, was it uprising? But here we will not discuss about them. Why? Because that is not in your syllabus. We will discuss only the causes, and here I want to inform you the causes is also not in your syllabus, only the sudden reactions and some social and economical causes, and little bit the political causes explained in your chapter, but directly only the sudden reactions explained. And what's happened during that time, it was also explained in your this chapter. But we will read whole the political causes, social causes, economical causes, and sudden reactions. We are talking about that Benjamin Disraeli, Ashok Mehta, V.D. Savarkar, and Shashi Bhushan Chaudhary, they tried to prove that this was the national revolt. This was not mutiny, this was not uprising, this was revolt which was done by the common peoples along with the सिपाहियों के साथ. ये जो सामान्य लोग थे, I am not telling only the common peoples. The common peoples, zamindars, local kings, talukdars, they were also participated in this revolt against Britishers. Shoulder to shoulder, they played important role in that moment. Dear student, okay, so let's start one by one and try to understand that the causes. First causes, the causes is the political causes. We will try to read the political causes. First, political causes. There are the various causes in the political way. First, the doctrine of lapse. What? नहीं, यहाँ से चलते हैं. First, the subsidiary alliance. (1799). Subsidiary alliance. What was subsidiary alliance? Subsidiary alliance, that was the very important alliance started by the Britishers. Lord Wellesley, who was Governor General of the East India Company, Governor General of India during 1799, he started that alliance, subsidiary alliance, Sahayak Sandhi. According to that, the local kings, they have to abolish their army and their whole security that was nurtured, that was protected, that was उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था देने का काम अब अंग्रेजों के द्वारा होगा. I mean to say that the one British resident appointed in the court of the local kings, and this resident's responsibility to provide the security, safety for their states, and that's result क्या करना होगा? The kings, they have to pay money for that residents and their expenses. उस रेजिडेंट के वेतन और उनकी सेना का वेतन यहाँ के लोकल किंग्स को देना था, और इस लोकल किंग्स को अपनी सेना खत्म कर देनी थी, समाप्त कर देनी थी. It was the very cleverest step which was taken by the British governor Lord Wellesley. उसने बड़ी आसानी से अंग्रेजों की फौज को, अंग्रेजों की रेजिडेंट को आर्मी में सेट कर दिया, उनके लोकल किंग्स के राज्यों में बैठा दिया, पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली सुरक्षा की.
अब राजा चाह के भी रिवोल्ट नहीं कर सकता था. Why? Because they have no army. Army, it means power. They have no power. So how can they become rebellion? That was also the unsatisfaction of the king. Second, I think you can understand that subsidiary alliance. Second, doctrine of lapse. Doctrine of lapse. 1852. 53. 1852. Doctrine of lapse. According to doctrine of lapse, this doctrine of lapse is started by Lord Dalhousie. According to that, the kings, if he had no successors, if he had no son, then without permission of the East India Company and the officials, he cannot hire their successor. He cannot adopted the stepson. So, this rules, according to that rules, their whole state merged in East India Company. That was the great unsatisfaction. For whom? That local kings. उस लोकल राजाओं के लिए एक सबसे बड़ी समस्या उनके लिए यही थी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको डलहौजी ने इम्पोज किया था. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग राजा अपने, अगर राजा को कोई पुत्र उत्पन्न न हो, आई मीन टू से दैट without, suppose a king have no son, so in that conditions he cannot hire, he cannot adopt son, he cannot announce their successors without the permission of the state company, without the permission of the governor general. I mean to say that the doctrine of lapse strictly stopped them to do that steps, hire the successors, adopted the son and such type. So that's why they became very aggressive against them. इसीलिए उनके मन में भी एक अनसेटिस्फेक्शन था. एंड दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ इनाम कमीशन. Inam Commission, that was the rule. According to that commissions, a rule passed by the Dalhousie. इनाम कमीशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया? डलहौजी ने सभी जमींदारियों की जांच कराई. जमींदार, इट मीन्स द जमींदार्स एंड देयर जमींदारीज, that was inspected by that commissions. If they have no legal document, it means that the jamindari was what? The paternal property of that jamindar. In the absence of the legal documents, their jamindari that was auctioned by the British Empire. इनाम कमीशन के द्वारा जमींदारों के क्षेत्र, राज्य उनसे छीन लिए गए, ले लिए गए. That was the what? That was a strange matter with the jamindars also. So that's why the jamindars became rebellion against that empire, British Empire. And the major problems which we are going to discuss, the major very born problem, that was what? That was insult of Mughal emperor. बहादुर शाह जफर. मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के इंसल्ट की बात. और ये प्रॉब्लम्स कब हुई? कहता है कि बहादुर शाह जफर BSJ in short form, during 1803 यहां से बहादुर शाह जफर किसके साथ रहने लगे? बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के आधिपत्य में, ब्रिटिश संरक्षण में मुगल एम्परर रहने लगे थे. आई एम नॉट टेलिंग बहादुर शाह जफर, आई एम टेलिंग द मुगल एम्परर्स. दे what? Accepted the British shelter. From which date? From 1803. It was clear date that during 1803 they were clearly adopted the shelter of the British Empire. And then after, the situations that has changed gradually. In the starting phases, the British governor told the British officials that
द डियरेस्ट सर्वेंट, दैट द वर्ड यूज्ड बाय देम, क्या वफादार, द लॉयल सर्वेंट, डियरेस्ट सर्वेंट, और द व्हाट, एक मतलब राजा का प्रिय पुत्र, राजा का क्या कहेंगे उसको, एक वफादार नौकर जैसे शब्दों से मुगल एम्परर के द्वारा अंग्रेजों को संबोधित किया जाता था। लेकिन परिस्थितियां चेंज हुई, दैट हैज चेंज, द सिचुएशंस ग्रेजुअली चेंज ड्यूरिंग द एमहर्स्ट। एमहर्स्ट जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, एमहर्स्ट दैट वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल, he what strictly give the message to Mughal emperor that you are only what, कि अब आप नाम के ही मुगल बादशाह हैं। अब ये बात आपको साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि आपकी बादशाहत केवल नाम मात्र की है। वो ये जो नाम मात्र की बादशाहत है उसके आधार पे आपको क्या मिलेगा, आपको हम इस दरबार में जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो नजर देते समय खड़ा नहीं होगा। इट मीन जब बादशाह आए तो मुगल रेजिडेंट खड़े हो जाते थे। एमस ने कहा कि नहीं, आपकी बादशाहत नाम मात्र की है, हम खड़े नहीं होंगे, ब्रिटिश रेजिडेंट खड़ा नहीं होगा आपके कोर्ट में। उसके बाद कंडीशंस फिर बदली, उससे भी खराब हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय बादशाह को अपने सारे दावे का मतलब अपने दावे को छोड़ देने को कहा गया। ये दावा कैसा था? दावा मतलब मुगल एम्परर, आपने चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा होगा खिलात के बारे में, आपने वहां पढ़ा होगा कि सरहप्पा के बारे में, आपने वहां पढ़ा होगा कोर्ट के बारे में, कोर्ट डिग्निटी के बारे में, इन सारी चीजों पे, और किले, लाल किले के बारे में लॉर्ड एमहर्स्ट ने साफ साफ, लॉर्ड ऑकलैंड के समय तक आते आते साफ साफ कह दिया कि मुगल बादशाह को नजर लेने, खिलात देने, दरबार लगाने से पूरी तरीके से रोक दिया गया। दीवाने आम और दीवाने खास को भी बंद कर दिया गया। और अति तो तब हो गई, इट मीन्स लास्ट तो तब हो गया जब लॉर्ड डलहौजी ने मुगल एम्परर को लाल किला छोड़ने के लिए कह दी। लाल किला दैट वाज द सिंबॉलिक व्हाट, सिंबॉलिक प्लेस फॉर द मुगल एम्परर अकॉर्डिंग टू डलहौजी what strictly instruct them that you have to leave that fort because you are not the emperor of this country। और फिर लॉर्ड डलहौजी के समय जब लाल किले से हटने के लिए बादशाह को कह दिया गया, और लाल किला से हटने के साथ साथ एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि अब जो राजा होंगे, मुगल सम्राट होंगे, वो मुगल एम्परर टाइटल नहीं लगाएंगे, वो उस टाइटल की जगह क्या टाइटल अडॉप्ट करेंगे, वो उस टाइटल की जगह अडॉप्ट करेंगे प्रिंस की। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। और जो दूसरी, और ये इस सारी चीजें, व्हाट वाज हैपेंड विद द मुगल एम्परर, मुगल एम्परर वाज इंसल्टेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश ऑफिशियल्स टाइम टू टाइम। व्हाट आई एक्सप्लेन, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी ने साफ कहा कि आप लाल किला छोड़ दीजिए और अपने नाम, आपके बाद अब कोई भी आपका लड़का बादशाह की टाइटल नहीं लगाएगा, सम्राट की टाइटल नहीं लगाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा आप खिलात नहीं दे सकते, आप नजर नहीं दे सकते, आप दरबार नहीं लगा सकते, आप दीवाने आम और दीवाने खास भी पूरी तरीके से आपका बंद किया जाता है। और लॉर्ड एमहर्स्ट ने शुरू में कहा था कि कोई भी ब्रिटिश रेजिडेंट आपको नजर देने के लिए खड़ा नहीं होगा। That was the insult of the Mughal emperor. And one that was very important, what? कि अवध के नवाब, the नवाब of the अवध, नवाब NAWAB, नवाब of अवध, that was Nawab of Awadh. This topic also we will discuss in your chapter. नवाब ऑफ अवध, इनके साथ जो घटनाएं घटी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। फरवरी 1856, डेट फेब 1856, फरवरी 1856 अवध के ऊपर
एक क्लेम किया गया कि द नवाब दैट इज टोटली अनेबल टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर स्टेट, सो दैट्स वाई वी आर हेल्पलेस टू एक्वायर देयर स्टेट. हाउ स्ट्रेंज. हियर आई inform you that Awadh, that was the state who accepted the subsidiary alliance, and according to subsidiary alliance, the security purpose, the administrations, internal administration, that was controlled by the British resident. Even if the Awadh was claimed that you are not able to control that whole area, you are not controllable to your administration, so that's why you have no right to become a Nawab of that Awadh. एंड फिर उन्हें अवध को गद्दी से, अवध की गद्दी से नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया. 2 रिपोर्ट लगी. उसमें आउटरम की रिपोर्ट थी, उसमें हेनरी लॉरेंस की रिपोर्ट थी, और उसमें एक पादरी थे बिशप हैकर. इन तीनों की रिपोर्ट के आधार पे अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया. इट मीन्स 1856 फरवरी 1856 1856 अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जबकि अवध से अधिक अंग्रेजों का समर्थक तथा अधिकार जो आज्ञाकारी राज्य था और कोई नहीं था. अवध का जो चीफ कमिश्नर, अवध को क्या कर दिया गया, अवध को एक ब्रिटिश रेजिडेंट चीफ कमिश्नर का एरिया बना दिया गया, चीफ कमिश्नर का क्षेत्र दे दिया गया. अवध को एक चीफ कमिश्नर का क्षेत्र बना दिया गया, और हेनरी लॉरेंस अवध का पहला कमिश्नर अपॉइंट किया गया. डलहौजी ने इन सारे लीगल इलीगल वे से जो राज्यों को क्या किया था, हड़पा था, इट मीन्स इलीगली कैप्चर्ड किया था. ये सारी चीजें और भी राज्य थे अवध के साथ साथ. इट मीन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दैट वाज इम्पोज्ड ऑन सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, मछेरी, बूंदी, एंड दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ द स्टेट दैट वाज कैप्चर्ड बाय लॉर्ड डलहौजी ड्यूरिंग दैट टाइम. सो these are all, it means these causes were the political causes. So that's why that rulers, local kings, jamidars, they were strictly opposed the British rule. They want to free that rules. They believe that if the Mughal Empire again re-establish on whole India, then we will become very happy. हम प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे यदि इस तरह की चीजें राज्य में आई. अगर आप नवाब्स को देखें तो कहता है कि मेनी रूलिंग्स फैमिलीज ट्राइड टू निगोशिएट, एंड हियर दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि नवाब्स दे ट्राइड दैट सिचुएशन दैट हैज व्हाट द अंडर कंट्रोल देम, बट इट कांट, नहीं हो सका. द मेनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू निगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted to company to recognize her adopted son as her heir to kingdom after death of her husband. Nana Sahib, he was adopted son of the Bajirao II, Peshwa Bajirao II, placed that he be given his father's pensions when the latter died. However, the company confidence that the superiority and the military powers turned down this play. Awadh, what I explained that Awadh, that was the major unsatisfactions for the Indians. Awadh, he was the obliged state for the Britishers, even if he was captured, even if he was acquired by the British officials. Awadh was one of the last territory to be annexed in 1801. In 1856, finally it was annexed by the British Empire. As it was starting 1801, the Awadh, that was the first state that was annexed in 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. The Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned. The British rule was needed to ensure the proper information, proper administration. That's why I am saying it is very strange कि ये कितनी अद्भुत बात थी कि अंग्रेजों के रेजिडेंट उस राज्य में अपॉइंट थे, उसके बाद भी अंग्रेज उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे.
ब्लेम कर रहे थे कि मिस गवर्न कर रहे हैं नवाब, गवर्न जो नवाब है वो इसलिए इस लायक नहीं है कि वो इन चीजों को करें। और फिर द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड एंड इंसल्टेड ऑफ द नवाब। एंड आफ्टर I mean to say that what the demand of the Rajas and local king that was not accepted by that British officials and the insulted of the Mughal emperors. That was the pre-plan of the British Empire. What? The plan of the British Empire, the company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. In 1849, the Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after the death of none of the descendants would be recognized as a king. They would be just be called princes. It means that was the proper planning which was done by the British officials. These are the reason. In short, we can say that that was the political causes on the basis of that revolt happened. आज के लिए इतना ही. Next video में we will discuss about that the causes of social on the basis of the revolt happened. Goodbye and take care.